Hello, good evening, students. I hope I'm audible. Okay, so very good evening to all of you, students, and I hope I'm audible to everyone. Now, basically, the science students, you all must have had a good gap and you have revised things well, isn't it? Um, Basically, the math students, you had a long gap. So I expect that you have been revising things and you have understood and are almost ready for your exams, isn't it? I hope I'm audible. Type yes if yes, I'm audible. Right. So basically, I have my plan to discuss today, tomorrow, and again day after tomorrow, Friday, Saturday, and Sunday. The 3 days we will be utilizing, and we will have our final revision so that we are all set for the examination on Monday. Right. Monday your paper, and for many of you it will be the last paper, right? So all's well that ends well, and keeping that in mind, we will be preparing for our subjects. Now, when we talk about computer paper, there are three sections. Section A, B, and C. Syllabus के बारे में हम बात कर रहे हैं. तीन section है. Section A, B, and C. Section A is entirely of Boolean algebra. Section B, Java, and then Section C becomes data structure. ठीक है. तो हमारा आज का जो टारगेट होगा that will be section A, and then tomorrow we'll be talking about section B and section C के बारे में हम लोग कल बात करेंगे. ज्यादा एम्फेसिस हमारा कल का सेक्शन बी पे होगा और सेक्शन सी पे भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा कल सेशन लंबा करेंगे, 3 बजे स्टार्ट करेंगे. आई जस्ट सी लाइक इफ फीजिबल, अगेन कल अगर टाइम रहा तो कल दिन में भी कर सकते हैं सेशन. आई जस्ट लेट यू नो सो वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द डे टाइम एज वेल, so that we can do it well. Otherwise 3 बजे का टाइम रखेंगे कल का. So today we will try to fatafat have a revision of all the Boolean parts, and then again I'll be discussing certain questions of the different types. हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस ये करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन किस सेक्शन से आएंगे, and that will be there, that we will be discussing. Okay, so I hope we start now, because जो लोग लेट से ज्वाइन करेंगे again they will be able to access the session. Now, when we talk about section A, that is Boolean algebra, right? Section A Boolean algebra है. And जब हम section A के बारे में बात करते हैं, good evening Ali, section A के बारे में जब हम बात करते हैं तो section A में basic things which are there, that is the proposition logic, right? Proposition logic, well-formed formula, truth table, and the interpretation of the well-formed formula, proposition values, and then the laws that is there, then the postulates of Boolean algebra, operations and or not, that those operations, and then the basic theorems of Boolean algebra, that also will be discussing. Then computer hardware में आ जाते हैं तो all the various types of gates, combinational gates, then application of Boolean algebra, again encoder, decoder, multiplexer, half adder and full adder. That is the thing. This is what is there when we talk about section A of our syllabus. So just have a quick recap of the proposition logic and the Boolean algebra. I'll just share my screen, and if you have any doubts, you can keep on typing in the chat. I'll be replying to that also, and I'll be explaining also. So I'll be available both on the chat window as well as I'll be explaining also. So if you have, I have this window also active. So if you have anything, you can type. I'll be responding to the chat also. Fine. Okay, so I'll share my screen. We'll talk about the proposition logic first.
ओके, प्रोपोजिशन लॉजिक क्या होता है? प्रोपोजिशन लॉजिक इज बेसिकली अ स्टेटमेंट, और प्रोपोजिशन लॉजिक को हम कह सकते हैं कि प्रोपोजिशन लॉजिक इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोजिशन, बेसिकली इज अ स्टेटमेंट व्हिच आइदर रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट जो ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट करता है, दैट इज अ प्रोपोजिशन। ठीक है, तो प्रोपोजिशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो प्रोपोजिशन आइदर रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स। लाइक आई से इट वाज रेनिंग टुडे, now it was raining today, it returns to true, so it is a proposition. India won the Champions Trophy. It's true statement. So such a statement which returns either true or false, उसको हम proposition कहते हैं. Proposition दो तरह का होता है, simple proposition and compound proposition. Simple proposition एक single statement होता है और compound proposition एक से ज्यादा statement होता है. So simple proposition is one that does not contain any other proposition. और कंपाउंड प्रोपोजिशन में क्या होता है? देयर आर मोर देन वन प्रोपोजिशंस व्हिच आर कनेक्टेड बाय एनी कनेक्टर, किसी भी कनेक्टर के थ्रू या ऑपरेटर के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं. सो प्रोपोजिशन को जब हम कनेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो वी हैव डिफरेंट कनेक्टर्स. सबसे पहला आता है डिसजंक्शन. डिसजंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? और भी कहते हैं. डिसजंक्शन इज आल्सो रेफर्ड टू एज और इसमें क्या होता है? और ऑपरेशन है तो क्या होगा? इफ either of the inputs is true then the output is true. ठीक है, डिसजंक्शन में अगर एक भी इनपुट ट्रू होगा तो आउटपुट हमारा ट्रू होगा. सो 0 0 में 0, 0 1 में 1, 1 0 में 1, 1 1 में 1. सो ए और बी, ठीक है, डिसजंक्शन हो गया हमारे पास. डिसजंक्शन का सिंबल क्या हो जाता है? वी की तरह होता है हमारे पास. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन. कंजंक्शन इज एंड ऑपरेशन होता है कंजंक्शन, और कंजंक्शन के केस में क्या होता है? इट इज नोटेड बाय द सिंबल डॉट. और कंजंक्शन में हमारे पास क्या होगा कि कंजंक्शन इज जस्ट लाइक द एंड ऑपरेशन. अगर दोनों इनपुट हाई होगा, इन दैट केस ओनली द आउटपुट इज हाई, अदरवाइज द आउटपुट इज जीरो. दैट इज अबाउट अ कंजंक्शन. एंड ऑपरेशन भी हम लोग इसको कहते हैं, दैट इज कंजंक्शन. उसके बाद है कंडीशनल. कंडीशनल को हम क्या कहते हैं? इफ. ठीक है, कंडीशनल को हम इफ भी कहते हैं. मतलब हमारे पास क्या होगा इसमें कि अगर हमारे पास कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट होगा तो ये क्या हुआ कि 1 0 में 0 होता है, बाकी सारी कंडीशंस में इट इज 1. मतलब 0 0 में 1, 0 1 में 1, 1 0 में 0 और 1 1 में 1. So that is in case of a disjunction, that is in case of conditional. इसको हम लोग if भी बोलते हैं, implies to भी बोलते हैं, right? A implies to B, right? A implies to B. मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जहां पे हमारे पास दोनों सिचुएशंस अगर हमारे पास ट्रू है, इन दैट केस इट विल बी अ वैल्यू 0 0 में 1, 0 1 में 1, 1 0 में 0 और 1 1 में भी 1 आएगा. दैट इज इन केस ऑफ अ कंडीशनल. ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया कंडीशनल. एंड दूसरा है उसके बाद बाय कंडीशनल. बाय कंडीशनल इसको हम लोग कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, राइट? अगर दोनों 0 है या दोनों 1 है, राइट? दोनों 0 है या दोनों 1 है, in that case it will result to 1, otherwise in other cases it will be 0. ठीक है, that is a biconditional. इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एक दोनों तरफ एरो होता है, both sided, so that is a biconditional. तो ये क्या होता है? अगर दोनों 0 है तब 1 होगा, अगर दोनों 1 है in that case it will be 1, in all other cases it is 0. उसके बाद है निगेशन. निगेशन क्या है? निगेशन इज द कॉम्प्लीमेंट. अगर 0 है तो उसका 1, 1 है तो 0. दैट्स द कॉम्प्लीमेंट जो हम लोग किए हुए. तो प्रोपोजिशंस को हम लोग सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहते हैं, या इसको हम वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला भी कहते हैं, WFF. देन बात आती है ट्रुथ टेबल की. व्हाट इज अ ट्रुथ टेबल? A truth table is a complete list of possible truth values of a proposition. मतलब अगर हमारे पास कोई प्रोपोजिशन है, उसके कितने टोटल आउटपुट स्टेट्स होंगे, दैट इज अ प्रोपोजिशन. मतलब जितने भी पॉसिबल इनपुट स्टेट्स होंगे, उन इनपुट स्टेट्स के क्या आउटपुट होंगे, दैट इज नोटेड बाय अ प्रोपोजिशन. Sorry, that is noted by a truth table. मतलब कि अगर and total number of statements in a truth table is equal to 2 to the power n, 2 to the power n. अगर हमारे पास 3 इनपुट है, like A, B and C, then 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
1 1 1 कितना हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 there are total 8 states there were 3 input states तो हमारे पास total output कितना आ गया 8 2 to the power 3 8 states हमारे पास आएंगे now this truth table can be either a tautology or it can be a contingency or it can be contradiction अगर कोई truth table राइट अगर कोई ट्रूथ टेबल सारे इनपुट कंडीशंस में आउटपुट 1 देता है then it is known as a tautology ठीक है if a truth table gives output 1 in all the input conditions then it is a tautology if it gives output in all 0 in all the input conditions then it is a contradiction and if it is giving a combination of 0 and 1 then it is known as a contingency so tautology contradiction and contingency okay उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव अगर कोई कॉम्बिनेशनल स्टेटमेंट है हमारे पास कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है देन इन दैट केस अगर मेरा स्टेटमेंट है A implies to B उसका कन्वर्स हो जाएगा B implies to A मतलब अगर स्टेटमेंट था कि इट इज रेनिंग एंड स्काई इज नॉट क्लियर A implies to B क्या हुआ इफ इट इज रेनिंग देन स्काई इज नॉट क्लियर ठीक है इसका कन्वर्स क्या होगा if sky is not clear then it is raining ठीक है A implies to B का कन्वर्स हो जाएगा B implies to A I hope this is clear A implies to B का कन्वर्स हो जाएगा B implies to A इनवर्स अगर A implies to B है तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है नेगेशन ऑफ A implies to negation of B मतलब अगर P है it is raining और sky is not clear if it is raining then sky is not clear इसका इनवर्स क्या हो जाएगा if it is not raining then sky is clear right इनवर्स में हो जाएगा negation of A implies to negation of B ठीक है ये हो गया इनवर्स थर्ड होता है इसमें हमारे पास कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है कि पहले वाले का मतलब कंडीशनल में एक और चीज ध्यान रखना होगा कि वी हैव एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट A implies to B लेफ्ट हैंड साइड में जो है दैट इज एंटीसीडेंट और जो राइट हैंड साइड में दैट इज द कॉन्सिक्वेंट तो अगर हमारे पास है A implies to B तो इसका जो कॉन्ट्रापोजिटिव होगा दैट इज नेगेशन ऑफ B implies to negation of A मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट था कि if it is raining then sky is not clear negation of B if sky is clear then it is not raining negation of A implies to negation of B ठीक है ये हो गया हमारे पास इसके बाद हमारे पास कुछ बुलियन लॉज हैं बुलियन लॉज हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ 0 plus P equal to P and 0 dot P equal to 0 ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ 1 plus P equal to 1 and 1 dot P equal to P एग्जांपल जैसा कि मान लेते हैं P का वैल्यू 0 है तो 1 और 0 is 1 1 dot 1 is 1 अगर हम वैल्यूज की बात करें तो वी कैन गेट दिस वैल्यू एब्जॉर्प्शन लॉ P plus PQ equal to P दूसरा है P plus Q equal to P involution double complement P double complement is equal to P idempotent law P plus P equal to P and P dot P equal to P complementary law P plus P bar equal to 1 P dot P bar equal to 0 कम्यूटेटिव लॉ P plus Q equal to Q plus P या फिर हम कह सकते हैं P dot Q equal to Q dot P एसोसिएटिव लॉ P plus Q plus R this becomes equal to P plus Q plus R दूसरा इसमें P dot Q dot R is equal to P dot Q dot R एसोसिएटिव लॉ हो गया then distributive P dot Q plus R is equal to P dot Q plus P dot R similarly we will get the other law also De Morgan's law again important A plus B bar is equal to A bar dot B bar A plus B bar is equal to A bar dot B bar and other one is A dot B bar is equal to A bar plus B bar then conditional law P equal to Q equal to P bar plus Q and then Y conditional that we have done already ठीक है So this one is clear. Now one thing, just if we talk about the De Morgan's theorem and again the duality theorem, I just use the whiteboard now. Okay. Now when we talk about the De Morgan's theorem,
De Morgan's theorem is used to find the complement of any Boolean expression. Right? De Morgan's theorem is used to find the complement of any Boolean expression. Like if I see, for example, I have a statement f is equal to xy plus xz. F is equal to xy plus xz. Now we have to find the complement of this Boolean expression, right? We have to find the complement of the Boolean expression. To complement निकालने के लिए, as I told, what we do, we need to find the complement. F bar is equal to xy plus xz का complement, right? Xy plus xz its complement. So what we do? We break the bar, change the sign. Xy bar dot xz bar. Right? Now, this again the bar has to be changed. So this will become x bar plus y bar dot x bar plus z bar. Is it okay? So this way we can get a complement of the Boolean expression. Okay, complement we can get. Okay. Yes, we can avoid, no need. Just I made it to make it simplified so that it can be understood easily, right? Even if you don't give, no problem to that. Yeah, because this dot has to be applied for this, so that's why. So it's better to give it here. So this was the complement. Now again, if I say what was the complement? Again, now if I have to get the dual of this, right? Duality theorem states that starting from one Boolean expression, we can obtain another expression by changing each and to or, changing each or to and, changing each one to 0 and then changing each 0 to 1. So if this is my expression, this will be what? X plus y dot x plus z. Right? Or to and to or, 1 to 0, 0 to 1. That is duality theorem. So starting from one Boolean expression, we can obtain another Boolean expression. Again, for example, if you are asked to verify any of the theorems, like I say, if the question says you to state the duality theorem and verify any one theorem using the truth table. So I consider A plus B bar is equal to A bar dot B bar. A plus B bar is equal to A bar dot B bar. Okay. Now, if I say this theorem is to be verified, I have the truth table. Okay. This is A, this is B, this is A plus B, this is A plus B bar, this is A bar, this is B bar, and this is A bar dot B bar. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. This will be the four states. A plus B. A plus B it is 0, 1, 1, 1. A plus B bar it is 1, 0, 0, 0. A bar 1, 1, 0, 0. B bar 1, 0, 1, 0. A bar dot B bar, this is 1, all others are 0. Now this was the LHS, this was the RHS. LHS is equal to RHS. So if you are asked the definition of any of the theorems and you are told to identify or prove it using, you can do it, you can prove the Boolean expressions if needed. I hope this is okay to everyone. Okay. Class 10 students. Good. If you have attempted 5 questions from section B, then also it will be considered, and the best 4 will be, means all of them will be evaluated, and the best 4 will be counted. Right?
Even if you have attempted 6, the best 4 will be counted, right? Okay, so that is about this verifying the truth tables. Now, if I say again, you will be, you need to remember this expressions. No, don't worry, don't worry. Now, when you need to remember all the Boolean laws. Once again, I'll revise the Boolean laws so that you will be able to understand it. Okay. Yeah. I'll just once again share the screen so that you are able to, again you will be revising this Boolean logic. Okay. Properties of 0, properties 1, adoption law, involution law, idempotent law, complementary law, commutative law, associative law, distributive law, De Morgan's theorem, right? So these are the various Boolean laws you need to revise and remember. Okay? Now I'll be discussing about the various logic gates. ठीक है, logic gates के बारे में हम लोग बात करेंगे. Okay. Now, as I have told you multiple times, logic gates, they are the basic building blocks. Logic gates, we have 3 categories of logic gates. Logic gates are the basic building blocks of any digital system. It is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. Basic gates, AND, OR, and NOT. Universal gates, NAND and NOT. Exclusive gates, XOR and XNOT. AND gate gives a high output when all the inputs are high, right? AND gate gives the high output when all the inputs are high. This is the logic diagram, logic symbol, logic statement we have. OR gate, this is the truth table, A, B and AB, 0, 0 is 0, 0, 1 is 0, 1, 0 is 0 and 1, 1. When all the inputs are 1, the output is 1. In a 3 input, even 1, 1, 1. When all the 3 inputs are 1, then the output is 1. OR gate, it gives the high output when either of the inputs are high. Right? So this is the symbol and this is the logic statement A plus B. A plus B, 0, 0 is 0, 0, 1 is 1, 1, 0 is 1, 1, 1 is 1. NOT gate gives the complement. It gives the complement A is 0, B is 1, A is 1, B is 0. NAND is the complement of AND gate, right? NAND gate is the complement of AND gate, right? If we add a complement, add a NOT gate to the output of AND gate, it is a NAND gate. So it gives the output 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. When both the inputs are high, then it gives us 0 output. NOR gate again, it is the complement of OR gate. So it gives, when it is 0, 0, when both the inputs are 0, then it gives 1. In all other cases, it gives 0. It is just A plus B bar, right? Why NAND and NOR gates are called universal gates, right? Why NAND and NOR gates are called universal gates? These gates are called universal gates because using this NAND and NOR gate, we can get the output of any other gates, right? NAND gate or NOR gate को use करके हम किसी भी gate का output हम obtain कर सकते हैं. That's why they are known as universal gates, right? Then we have the XOR gate. XOR gate, AB bar plus A bar B. That is XOR gate, right? The XOR gate gives a high output when odd number of inputs are high, right? When odd number of inputs are high, then the XOR gate gives a high output, and then the XNOR gate gives a high output when even number of inputs are high, 0, 0 and 1 1 case it gives. So you need to know the truth table and the logic circuit for the XOR and the XNOR gate, 2 input, 3 input. You need to understand and identify the truth table for that. Adder circuit is a digital circuit that performs addition of numbers, right? Adder circuit of addition दो तरह का होता है, half adder and full adder. Half adder, what happens to obtain the sum and the carry bits, right? Sum and carry bits. Like if we talk about the sum, it gives A XOR B, and carry it is A and B. To obtain the sum, we use the XOR gate. To obtain the carry, we use the AND gate.
So this is to add two bits. Difference between half adder and full adder is that half adder में क्या होता है, दो bits को add करते हैं और full adder में हम 3 bits add कर सकते हैं. Full adder is the adder which add 3 bits and produces two outputs, एक sum और एक carry. Sum क्या होता है, A XOR B XOR C, right? Sum is A XOR B XOR C और carry होता है AB plus BC plus AC. So this way you will get the sum and the carry in case of a full adder circuit, right? So this is about this logic gates parts, ठीक है? Okay. Okay. इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाकी देन और भी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स में आ जाता है एनकोडर, डिकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर, राइट? एनकोडर, डिकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर्स आर देयर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनकोडर, राइट? एनकोडर क्या होता है? एनकोडर इज यूज्ड टू एनकोड, एनकोडिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी कन्वर्ट, राइट? एनकोडर में हमारे पास होगा कि कन्वर्ट्स द वेरियस डिजिटल सिग्नल्स इनटू बाइनरी फॉर्म. जैसे यहां पे ये देखो एक एनकोडर है 0 0 0, इट विल रिजल्ट 0, राइट? 0 0 1, यहां पे हम तीन और गेट्स लगाए हैं और सभी में जैसे 0 0 1 तो केवल ये वाला 1 आया. 0 1 0, so this one is connected. 1 0 0, this one, others are not connected. 1 0 1, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 0, 1 1 1, all three are connected. So this is encoder. Then we can have, for example, if you talk about a decoder. Decoder is a combinational circuit that converts binary input to decimal form. Binary input को decimal में convert करने के लिए use करते हैं. Now here what happens? We have those inputs and again there are two things. One is the normal and one passes through the NOT gate. जो हमारे पास अगर 0 है तो 0 को हम ऐसे दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के थ्रू और 1 अगर है तो डायरेक्टली हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं एंड देन इट फाइनली गेट्स द वैल्यू. लाइक अगर यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमारे पास है 0 0 0, ये तीनों हमारे पास नॉट वाले से आया. 0 0 1, तो 0 नॉट वाले से एंड 1 इज कमिंग विद द नॉर्मल वन. That is decoder. Multiplexer again it is just like the decoder but again there is one data signal and the data signal is passed through the OR gate. ये AND gate है, इस सबके आउटपुट को एक OR gate से कनेक्ट करके एंड तो उसमें क्या होता है जो डेटा सिग्नल होता है that data signal is getting transferred, right? Data signals, there are multiple inputs and they are passed through the AND गेट और सबका डेटा सिग्नल होता है. तो जो डिकोडर से सिलेक्ट होगा उसका जो डेटा सिग्नल होगा पास हो जाएगा, then it becomes a multiplexer, many into one. So multiplexer are combinational circuits which inputs parallel data and outputs one serial data line. They are used for data transmission by converting parallel data into serial data. So that is a multiplexer, ठीक है? 8:1 multiplexer. देखो यहाँ पे सबके साथ एक डेटा सिग्नल है और वो डेटा सिग्नल फिर आगे कनेक्ट हो जाता है. So that is the example of a multiplexer. Decoder we already discussed, multiplexer we already discussed. So this is about this part. I hope till here it is clear to everyone. Okay. Now let us talk about certain things. You can be asked, you can be given some Boolean expression, you could be asked to find the min term, max term. Min term के केस में क्या होता है? Min term, that is the SOP expression. तो उसमें 1 is taken as non-complement and 0 is taken as complement, right? For example, if I say write the min term of f a b c d. Write the min term of f a b c d
when A equal to 1, A equal to 1, B equal to 0, C equal to 0, and D equal to 1. Right? Write the minterm of this F, A, B, C, D. Kindly do it. Write the midterm of F, A, B, C, D when A equal to 1, B equal to 0, C equal to 0 and D equal to 1. Yes. What will happen? Anybody could write in the output, in the chat. What will be the answer? A is 1, B is 0, C is 0 and D is 1. So this will be A, B bar, C bar, D. This is the midterm. And if I have to write the max term will be, in max term what happens? 0 is taken as non-complement and 1 is taken as complement and we use plus. So we will say A bar plus B plus C plus D bar. I hope this is clear to everyone. Yeah. Okay. Now let's see. Could you all be along with me? Like if I say the complement of the Boolean expression P dot Q bar plus R. The complement of the Boolean expression is what? P dot Q bar plus R bar. You have to find the complement. Let's see. It is P dot Q bar plus R bar X bar. Right? So I'm just putting this bar here. Okay, so this is now P dot Q bar X bar dot R bar bar. So it is now X bar, right? P dot Q this bar. So it is now P dot Q dot R. So it is P dot Q dot R. This will be the final result. I hope this is clear to everyone. Great. So I hope this is clear to everyone now. Okay. Okay. Then this was related to complement. Again, if I say the dual of P plus P bar plus dot Q plus 0 is equal to Q. You have to find the dual of this expression. Find the dual of this expression. So what will be? P dot P bar plus Q dot 1 is equal to Q. And changes to or changes to and, 0 changes to 1, and 1 changes to 0. So this is clear, I hope. Okay.
So this canonical forms, SOP, POS, I hope duality theorem, De Morgan's theorem, find the complement. Till here, nobody should have a problem. Fine? Okay. Then I once again directly come, okay, to a part which will give you now 10 marks directly. Like if I say, the question is reduce the given Boolean expression truth table by using 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 0 to 4, 8, 10 to 13. Okay, there is F, A, B, C, D is equal to sigma 0 to 48, 0 to 48, 9, 10, 12, 13, right? 0 to 48, 9, 10, 12, 13. I have to solve it. Okay? I just make the K map like this. A proper K map needs to be drawn. Okay? A bar, B bar, A bar, B, AB, and AB bar. C bar, D bar, C bar, D, CD, and CD bar. How do we number? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay? Now 0, 0, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13. Okay? 0, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13. This is done. Okay? Now what happens here, you see, we can get this squad. We get this squad. And again, I'm getting 1, 2, 3, and 4. I'm getting a rolling quad. So what else right here? Quad 1 between 0, 4, 8, and 12. This is C bar, D bar. Quad 2 between 8, 9, 12, 13. This is equal to B bar cancel here. This side it is A, and यहाँ से C, D bar cancel here. It is C bar. And again, rolling quad between 0 to 8, 10. This you see here. Either say A and A bar cancel each other, so I'm left with B bar. And here say C bar cancel each other, I'm left with D bar. So what will be the final result? F is equal to C bar D bar plus AC bar plus B bar D bar. Okay? Now if I have to draw the truth table A, B, C, D, you take like this. C bar D bar. So C bar D bar. Okay. We'll use AND gate. AC bar. This is A. This is C bar. Then B bar D bar. B bar D. And all these three we will pass through a
OR gate. This will be the logic circuit. I hope it is clear to everyone. See, pair ले सकते हैं, that is good, but again what will happen, the circuit will be expanded. So the purpose for the reducing, that is we have to get the least value, means we have to get a bigger group. Practical purpose जो हम समझाते हैं हमेशा that I tell कि अगर मान लो कि एक पेयर बनाते हो, वहाँ पे दो पेयर बना रहे हो, और अगर हम एक क्वाड बना रहे हैं तो सिंपली दो टर्म हमारे पास आ रहा है. अगर वही पेयर बनाएंगे तो दो हमको तीन टर्म्स का वहां पे स्टेटमेंट आएगा. सो द सर्किट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, इट विल नॉट बी रिड्यूस्ड. द पर्पस हियर इज, द पर्पस ऑफ के मैप इज टू रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन. सो हमारा रिडक्शन नहीं हो पाएगा. सो वी हैव टू लुक फॉर द बिगेस्ट ग्रुप. यस, मार्क्स कटेगा, राइट, मार्क्स कटेगा. Is it clear to everyone? Because करने को तो फिर अगर वही मेरे पास कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 है. ओके, क्योंकि 8 है 12 3 4 बन रहा है, इससे अच्छा पेयर बनाते हैं तो सही नहीं रहेगा ना. क्योंकि अगर पेयर बनाओगे तो अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर पेयर बनाओगे तो देयर विल बी 3 टर्म्स नीडेड. ठीक है, 3 टर्म्स आएगा ना. हम क्वाड बना दे रहे हैं तो हमको 2 टर्म में मेरा काम हो जा रहा है. तो अगर 2 टर्म में काम हो रहा है तो माय सर्किट इज रिड्यूस्ड. I'll come to that. We'll make the same, to again I'm reminding, we'll make the same truth table. Truth table हमारा सेम होगा whether the question is asking SOP और POS. ठीक है, क्वेश्चन अगर SOP पूछ रहा है, POS पूछ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है ट्रूथ टेबल बनाने के लिए. क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, पहले हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे. ट्रूथ टेबल बनाने के लिए एसओपी है या पीओएस है उससे कोई मतलब नहीं है. अगर एसओपी बनाना है या क्वेश्चन में बोला है एसओपी, देन व्हाट वी विल से, जहां जहां आउटपुट 1 आया है उसको लेके एसओपी वाला टेबल बना देंगे. अगर हमारा वो पीओएस बोला है तो उस ट्रूथ टेबल में जहां जहां 0 आया है हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे. The truth table will always remain the same. Truth table बनाते समय हमको कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर ट्रूथ टेबल गलत कर दोगे सारा चीज गलत हो जाएगा. Am I audible students properly? Students, those who are attending the sessions, am I audible well? I hope this logic is clear to everyone, no? K-map. Okay, I repeat. Okay, so this is right. Yes, okay. So I hope this is SOP is clear. Should I solve one POS also? Sorry, means yes, POS also. चलो एक POS लेते हैं हम. 0 1 2 4 6 8 9 10. Okay, this is F A B C D is equal to 5 0 1 2 4 6 8 9 10. See the question. 0 1 2 4 6 8 9 10. Yeah. ठीक है. Now we will first make the truth table. Truth tables 1 2 3 4 1 2 3. देखो वहां पे था बस ए बार बी बार, या a प्लस बी. ए बार बी मींस a प्लस बी बार. a b बार a बार प्लस b.
नहीं, A B है ये, तो it will be A bar plus B bar and then A bar plus B, right? Here C plus D, C plus D bar, C bar plus D bar and C bar plus D. Okay? Now 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The numbers will be like this: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. It is 0, 1, 2, 4. So 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 6, 8, 9, 10. Now you see here, if I talk about the groups, here also I can make one rolling quad like this. Okay? I can make one rolling quad like this, and again I'll make a rolling quad third like this. So rolling quad 1 between 0, 1, 8 and 9. 0, 1, 8, 9, A bar cancel each other. This side again C and D bar. So it is A plus C. B plus C. B plus C. Rolling quad 2. Rolling quad 2 between 0 to 4, 6. 0 to 4, 6. Now this is B and B bar cancel each other. This is A plus C and C bar cancel each other. It is D. And again, rolling quad 3 in between 0 to 8, 10. Now this one, A and A bar cancel each other, so it is B. And this side it is C plus D, C or C and C bar cancel each other, D, D plus D. So this F becomes equal to B plus C dot A plus D dot B plus D. Now you can make the logic circuit A, B, C, D. I take here B plus C, B and C. A plus D, A plus D. B plus D. This is B and this is D. I connect it and then I'll pass it through a OR gate. OR gate से इसको connect कर दिए. Sorry, I did it wrong. This will be the OR gate, right? Yes. This will be OR gate and this will be OR gate and these three will be connected to a AND gate, right? I hope it is clear to everyone. Any queries in this? Let me know. You can see there is a problem with the light. Electricity is gone, so but I hope it is visible well. Anyone, any queries still here? Let me know. Okay. It's thundering outside. Okay, so I hope this K-map is clear to everyone. ठीक है? Combinational gates, you need to do it well. Half adder, full adder, multiplexer. Okay. K-maps I already explained that K-maps you have to do well.
And the story type questions, if you get, then in that case, as I told again, depending upon the conditions, there will be 3 conditions or 2 conditions. Depending upon the condition, you will make the truth table. अगर क्वेश्चन एसओपी बोला है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में एसओपी यूज करने को बोला है, देन यू विल यूज वेयर द आउटपुट्स आर 1, उसको ट्रूथ टेबल में लेके एंड देन यू विल सॉल्व एंड रिड्यूस एंड देन ड्रॉ द लॉजिक सर्किट इफ इट इज आस्क्ड. अगर क्वेश्चन में पीओएस बोला है, then we will look for those outputs जहां पे 0 आया है, उसको कंबाइन करो and then you can use that. ठीक है? If you will have some doubts, I can explain that question also. Okay, so I hope till now this is clear to everyone. For tomorrow's session again, we will be covering up the section B part, जहां पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट प्रोग्रामिंग पार्ट्स में. तो वहां पे हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे. आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू बी प्रिपेयर्ड विद स्ट्रिंग्स, एरेज एंड देन हम लोग इनहेरिटेंस और रिकर्सन, इसके बेस्ड हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे. स्ट्रिंग, arrays includes double dimension array also, and then we will be talking about recursion and we will be talking about inheritance. ये 4 चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे. एंड देन अगेन डेटा स्ट्रक्चर, इफ यू फाइंड टाइम डेटा स्ट्रक्चर कल करेंगे. ये नेक्स्ट, बट आई विल ट्राई दैट ऑल दिस थिंग्स जितना भी पोर्शन प्रोग्रामिंग का सेक्शन बी एंड सेक्शन सी का, सो वी विल ट्राई टू डू स्ट्रिंग, वी विल ट्राई टू डू एरे. हर टाइप का हम दो प्रोग्राम्स आई विल डू स्ट्रिंग, एरे, recursion and inheritance. That every question, every type I will be doing 2 programs of each type, and then again we will do data structure also, one question from all. So that will be our tomorrow session, a complete discussion of the programming part. Okay, so with this I'll end the session. Prepare and see you all again tomorrow in the next session. All the best to all of you. Thank you. Right, so if you have any further queries, you can. Yes, Ali, you want to ask something? Timing most probably 3 PM. अगर जल्दी करना होगा तो I'll just send a message. Right, most probably I'll try because tomorrow we have school. So if I come early, then I'll let you know. Otherwise, even if I would like to take from the school, I'll let you know. But most probably the timing will be 3 PM only. Fine. So good night and थोड़ा पढ़ाई करके then सोना. I'm just telling your group that everybody should connect tomorrow's session, then so that it is worth my efforts and everybody's. Okay, thank you.